Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for joining me today's session. On behalf of the Institute of Freelancing, the sequence of this lecture is related to the freelancing, your future career. And before I start today's session, my name is Hameed, and I'm basically the freelance entrepreneur and basically having more than 14 years of experience as a successful freelancer. And today's session is understanding the basic concept of web design and development. Let me start. There's so many students which are actually joining. Anyway, uh, keep on. Sorry, understanding the basic concepts of web design and development. That's the topic of today's session. Gradually, we will be proceeding towards the web design and development, but these are the basic concepts which are mandatory for all of you to understand at the initial level first. Okay, so let's proceed. Web development. What exactly it is called? The web development. Web development is the most simplest means to create a website for the internet. Okay, there are plenty of websites out there, and millions and millions and millions of the websites. They're just like painting is created by a painter. So a website is essentially built by a web developer and a web designer. It is always a combination of two things. One is the designer, the other one is the developer. Okay, and by the way, if you want me to proceed, yeah, yeah, I gave you the access. I don't know. You haven't logged in yet. Okay. Are you logged in now? Okay. So all set to proceed now. So we were talking about what exactly is the web development. Okay. So web development is the most simplest term, means to create a website for the internet. And there are plenty of websites out there. And just like as painting has been done and created by a painter, a website is essentially built by a web designer and a developer. There are two main essential parts of this design and development course. Okay, so to start up with, let's proceed one step more. Web developers are responsible for the coding and programming aspect of the website, whereas the web designer designs the theme, layout, images, and decides the color scheming of the website, which is then used by a web developer in putting together the complete website. So this is the basic responsibility. There are two basic parts of the web development, and with the help of these two parts you come up with a complete website. By the way, these are just the essential parts. Lekin in recent era, this is actually a बिल्कुल academic kind of terms है. But in recent era, जिस तरह web development ने evolve किया, things have been changed a lot and a lot, right? So let's proceed one step ahead. What exactly is the web page? A web page is simply an electronic page that is a part of a book, which in this case is a website. A website is composed for several web pages. Keep in mind, web page is a one page, website is a combination of different pages, right? The website is composed of several web pages. These web pages are the combination of text, images, videos, and links, hyperlinks. Web pages are often linked to each other through hyperlinks, right? So if you want to see any web page, just go to my website, that is hameedasghar.com, HAMEEDASGHAR.com. मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ आपके लिए. And if you go there and open up this website, and interestingly, that is the design part. ठीक है, हम जिस तरह मेन फोकस करेंगे वेब डिजाइन की तरफ, this is the front of the website. Whereas if you want to see the back of the website, I mean, अगर आप इसका प्रोग्रामिंग वो देखना चाहते हैं कि किस तरह हुई हुई है, तो कंट्रोल CTRL+U इज द की जो आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, यू फाइंड आउट कि ये इसके अंदर क्या कुछ चीज़ है. ठीक है, सो लेट मी
start with the new share, and let me check out and show you all that how does it work. ओके जी, लेट्स सपोज ये आपने मेरा ईमेल एड्रेस लिखा, दैट इज hameed.com. यू फाइंड आउट के दिस इज द वेबसाइट इज ऑफ माइन, ठीक है जी. दिस इज एक्चुअली द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, राइट. जो यूजुअली डिजाइनर्स या वेब के डिजाइन एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, दे आर द वन जिनको ये चीज, दे प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस यू करेंगे किसी भी जगह के ऊपर, इस वेबसाइट पे क्लिक करें, कंट्रोल प्लस यू करें, तो यू फाइंड आउट कि इसकी बैक साइड पे इसका ये सारा कोड लिखा, ठीक है. ये फ्रंट एंड के ऊपर जो कुछ टेक्स्ट, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, हाइपर लिंक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये पिक्चर्स, इमेजेस, and these are the animations, HTML5 based codes and things like this, and projects की ये सारी कुछ जो लगा हुआ है, दिस इज द काइंड ऑफ फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. वेयर जब ये प्रोग्रामर के पास जाता है तो वो प्रोग्रामर इसको इस तरीके से सारा कोड इनकोड कर, राइट. सो ये एक लंबी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर खैरियत की तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे प्रोसेस करेंगे. बट माय इंटेंशन इज नॉट इनटू कि मैं आपको किसी ऐसे चक्कर में फंसाऊं जहां पे जाके आप इतनी लंबी कोड लिखेंगे, ठीक है ना. दिस इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग जहां पे आपको इतने लंबे कोड में जाना पड़े, ठीक है ना. मैं ये जस्ट आप स्क्रोलर से देखते जाएं कि ये कितना लंबा कोड इसके बैक एंड पे लिखा हुआ है, एंड यू गॉट टू बिलीव मी ऑन दिस, मैंने इनमें से एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखी. ये सब ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, एंड ये वो तरीके हैं, ये वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि मैं इस ड्यूरिंग दिस होल कोर्स आपको ये सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है जी. सो लेट्स मूव बैक फ्रॉम हियर टू आवर जो प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर जाते हैं. सो आई होप कि आपको समझ आ गई दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड अ वेबसाइट, ठीक है. सो यू मूव टू द वेबसाइट, लेट्स प्रोसीड टू द next. So a web page is a one single page of the information, whereas a website is made up of number of pages. Clear, I think. What exists the hyperlink? A hyperlink is a link that is hyperactive. It is actually a link that directs you to a different pages on the same website or a different websites altogether. Here is a link. ये गोश्त देखें, यहाँ से मैं दोबारा वेबसाइट पे, अगर इफ यू वांट तो मैं एक सेकंड के लिए दोबारा जाता हूँ, एंड यू फाइंड आउट के मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, इट विल ऑटोमेटिकली गो टू दैट. मैं क्लाइंट्स पे क्लिक करूंगा तो ये क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स के ऊपर चला जाएगा. मैं अगर लेट्स सपोज टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करूंगा, जिन जिन के साथ मैंने काम किया, व्हाट दे सेड अबाउट माय सेल्फ, दैट इज आप यहाँ से जाके ये देख सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम ड्यूरिंग दिस होल कोर्स हम ये सारा कुछ प्रोड्यूस करेंगे. ओके, सो let's move roll back from here to one step back जहां से हमने, what exactly is the hyperlink? So a hyperlink is a link that is hyperactive. Hyperactive means normal text active नहीं होता, you are just going to read it. लेकिन अगर उस टेक्स्ट को हाइपर कर दे मींस वो कुछ आपको एक्टिविटी देगा while clicking on that, that is called a hyperlink, ठीक है. It is actually a link that directs you to the different pages on the same website or a different websites altogether. जिस तरह मैंने अभी टेस्टिमोनियल्स पे, कॉन्टैक्ट अस पे, क्लाइंट्स पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली जंप करके स्पेसिफिक लोकेशन पे चला गया. If you move your cursor over the text, it would often change to a finger, or sometimes the color of the text would change and the underline would appear. जब जैसे इस ऊपर आए उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, समटाइम्स ये अंडरलाइन हो जाएगा, समटाइम्स ये डिफरेंट बिहेव करेगा. इट इज ऑल अप टू दी डिजाइनर्स चॉइस, प्रोग्रामर्स चॉइस, या वेब डेवलपर्स चॉइस कि वो किस तरीके से इसको हाइपर एक्टिविटी शो करना चाहते. ओके जी, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द वेब ब्राउजर? That is another very important thing. Web browser or a software application that you use to access everything on the World Wide Web, commonly known as the internet. जैसे ही आप इंटरनेट ओपन करने के लिए कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, that is Google Chrome, might be Apple Safari, might be Opera, and might be Internet Explorer. इनमें से कोई भी आप यूज करते हैं, that is the application
जिसके अंदर आप जाके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहीं से चलते चलते मैं बताता जाता हूँ, जहाँ पे आपने URL मीन्स वेबसाइट का एड्रेस लिखा और एंटर किया, दैट वाज द फर्स्ट लाइन जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। सो इस सारी की सारी विंडो को ब्राउजर कहते हैं, एंड ब्राउजर से यू कैन प्रोसीड फर्दर। Okay, Ji, what exactly is a search engine? Search engine lets a user locate a relevant website based on the phrase or the keyword entered by a user. Google itself is दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, and if you want to search any single individual or any individual business or any individual entity, आप वहां से जाके जब गूगल की सर्च में जाके वो कैटेगरी डालते हैं, that is what called keywords entered by the user, and that phrase is searched by एक कॉमन एल्गोरिथम है, उसके थ्रू सर्च होती है और आपके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। Think of the World Wide Web, the internet, as a library of the websites, and you're looking for something specific, you then do search on the search engine. So that is called basically the definition of the word search engine. आप इसकी बाय द वे मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन इफ यू वांट टू एक्सेस एनीथिंग, इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग फर्दर, अगर आप इसके ऊपर सर्च कर रहे थे, just go to the web and search the world wide web, and details about the search engines. You find out so many articles, things, websites जिनके through further आप study कर सकते हैं. But overall, generally, this is good enough for you to understand. Next, what exactly is the IP address? Why the most important thing? IP address. IP address is exactly like is a unique numerical address that identifies every computer device like personal computers, tablets, smartphones, etc. to communicate with the other device in the IP network. It is basically a cell phone number for your laptop or like a number plate for a car. हर सादा लफ्जों में हर कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला ऑलवेज हैव एन आईपी एड्रेस। ठीक है ना, वो आईपी एड्रेस के बगैर इंटरनेट पे नहीं जा सकता। दैट इज द रीजन पीपल यूज टू हैक अदर्स, पीपल यूज टू हैक डिफरेंट वेबसाइट्स, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो कि क्लासिफाइड डाटा के लिए होती हैं, एंड वो सारी की सारी हैक होती हैं थ्रू दीज आईपी एड्रेसेस। ठीक है, and further, if you want to know more about this, how it works, the server receives a request from a page sent by your web browser. आप जो वेब ब्राउजर से जब सर्वर किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, द ब्राउजर कनेक्ट्स टू द सर्वर यूजिंग एन आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस ऑलवेज होता है जो आपके और सर्वर के दरमियान एक ब्रिज पैदा करता है। इन रिटर्न द सर्वर सेंड्स बैक द रिक्वेस्ट पेज बैक टू योर आईपी एड्रेस, and if you want to find out your IP address, check out whatismyipaddress.com. थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पॉज करता हूँ। चैट बॉक्स में मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस लिख के भेज रहा हूँ। आप इस वेबसाइट के एड्रेस से जस्ट गो टू द वेबसाइट whatismyipaddress.com। ये है वेबसाइट, वहां पे जाके आप अपना अपना आईपी एड्रेस चेक करें, एंड यहाँ चैट बॉक्स में एवरी इंडिविजुअल आप अपना आईपी एड्रेस वहां से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। एज सुन एज आप ये काम करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करें।
I don't know आप लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हैं, लेकिन it was so simple to get the access. आप जाके you can find out your personal IP address and that's it. Anyway, let me start. इसको आप अपने end पे दोबारा check करते रहना and we can, instead of wasting time, let's proceed further. Okay, good enough. 182.191.3582. Yes, absolutely. I got your Fatma. Good. And no, Fatma, you the one? Yes, Fatma Rahman. Bilkul, exactly. I got yours. I got your you're the first one. ठीक है. So from there you can find out जितनी दफा आप इसको अपने पास किसी जगह नोट रखें, ठीक है, आप इसको अपने पास नोट रखें, ठीक है, जो भी माज एहसन मन्नान हामिद, प्लीज आप अपने पास किसी जगह समवेयर नोट रखें. नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरनेट से लॉगिन करेंगे, लेट्स से टुमारो, डे आफ्टर और जिस टाइम पे भी, दोबारा आप अपना आईपी एड्रेस चेक कीजिएगा, दैट विल बी डिफरेंट टू दिस. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द होल आइडिया इज कि हम जब भी इंटरनेट से इंटरनेट पे लाइक इंटरनेट इज लाइक अ मोटरवे, जैसे ही उसके ऊपर एंटर होते हैं, वी नीड अ टिकट एंड दैट टिकट इज सेपरेट फ्रॉम द प्रीवियस वन. हर दफा आप जैसे ही मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगे, यू फाइंड अ डिफरेंट टिकट, दैट इज योर आईपी एड्रेस एंड यू आर नोन इन द वर्ल्ड बाय दैट आईपी एड्रेस. ओके. एंड आई जस्ट डू नॉट वांट कि मैं इससे ज्यादा फर्दर इसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि वो क्या क्या चीज है. गुड. गुड एनफ. Okay जी, let's proceed ahead. What exactly is a domain? The most important thing. भाई आज का जो सारा इंटरेस्टिंग, ये सारे का सारा प्रीएम्बल हम बना रहे हैं, आपने क्योंकि अपना अपना वेब डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे डोमेन्स एंड होस्टिंग्स की तरफ जाएंगे. ठीक है ना. ये सारा का सारा प्रीएम्बल एक सीक्वेंस बनता आ रहा है. एंड द आईपी एड्रेसेस आर, okay, the domain. This is the address people will use to visit your home, which is your website. And URL means Uniform Resource Locator, carries the domain name. For example, I gave you the domain name my address, right? This is the address people will use to visit your home. If you want to visit my home on the internet, my website address is Hameed HAMEEDASGHAR.com, right? So that is a uniform resource locator है, आप मेरे तक उसके थ्रू पहुंच सकते हैं, right? Okay, let's proceed next, and that is like जिस तरह मैंने आपको अपनी वेबसाइट बताई, आप जाके इस पे क्लिक करें एंड इसको देखें एंड यू फाइंड आउट कि किस तरह डोमेन का नाम हम प्लेस करते हैं, उसका विजिट, उसको होम को विजिट करने के लिए. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉप लेवल एंड सेकंड लेवल डोमेन्स. डोमेन नेम के दो पार्ट्स होते हैं, one is the top level and the second is the second level domain. A top level domain is extension. Top level domain is extension is the part of the domain name located on the right of the dot, like .com. ये बिल्कुल ऐसे ही है. Dot means your nose, one is your left side, one is your right side. ठीक है. तो अब एक टॉप लेवल डोमेन कम्स टू योर राइट साइड, द सेकंड लेवल डोमेन कम्स टू योर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड मींस कि जो आपका डोमेन नेम है, एंड टॉप लेवल डोमेन्स मींस डॉट कॉम है. डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट org, डॉट edu, डॉट pk, डॉट इन, दीज आर ऑल बेसिकली अ टॉप लेवल डोमेन्स, जिनको हम फर्दर अगले आने वाले कुछ सेशंस में हम स्टडी करेंगे. ठीक है जी. A TLD identifies something about a website associated with it, such as its purpose, the organization that owns it, or the geographical area where it originates. Like .com is mostly used for the commercial purposes, while .edu is used for the educational institutions. And to give you one more example, PAF Finishing School, on behalf of that institution, ये सारे के सारे कोर्सेज जो कंडक्ट हो रहे हैं, उनकी वेबसाइट का नाम है PAFfinishingSchool.edu.pk. .edu.com है या .pk. ठीक है. So that .edu means that is an educational website. ठीक है ना. This shows कि वो educational website है. .pk means it's from Pakistan. .com means it's a commercial website. इसे किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो. सेम इज द केस. .net means a complete network and associated network उसके साथ है. .org means it's an organizational based वेबसाइट है. ठीक है.
So let's proceed further. The final thing is, just like you would go through a property agent to buy a property, you need to go through a hosting provider to buy a domain. I hope this will make you clear. Like for example, if you want to have a property in Islamabad, it's not like कि आप किसी जगह पे जाएंगे और वहां जाके अपने ब्लॉक्स लेके जाएंगे और जाके ब्लॉक रख के और कहेंगे कि जी this is my location. No, it would never be like this. If you want to have a property in any city, anywhere, you have to first go to the property agent. He will tell you कि ये जगह available है या नहीं है. If that is available, what would be the price? If this is the price, if you agreed, then these are the legal requirements जो कि आपने fulfill करनी है. And then you can have the address, then you can have the you can house, physical house. These are the two different things. So अब जब physical house means कि logical name is just a name, just a domain name हम कहते हैं. Name is just like a name of that property. For example, if someone is sitting somewhere in Islamabad, he says that my address is house number this, street number this, sector I91, Islamabad. So that is just a name. That doesn't mean कि ये इस physical property का just name है. Physical property is separate, उसका name is separate. Later stage में अगर let's suppose आज Government of Pakistan announced that we are going to change the name of sector I9 to Qaid-e-Azam colony. So there's no problem. Property remains the same. The domain name has to be changed. वो change हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी एंड द वेबसाइट रिमेन्स द सेम, ऊपर उसके नाम चेंज हो जाता रहता है. फॉर एग्जांपल हमीद असगर के बजाय हामिद असगर हम कर देते हैं, तो दैट कैन बी डन, दैट्स नो प्रॉब्लम, वो हो सकता है. लेकिन उसके अंदर कंटेंट दैट इज योर चॉइस इफ यू वांट टू रिटेन द सेम और डिफरेंट. अब हम चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द होस्टिंग. सो होस्टिंग डोमेन नेम, आई होप विद दिस क्लियर हो गया था. अब हम चलते हैं होस्टिंग्स की तरफ. Let's suppose you have your coded website on your laptop or PC and you need to get it live on the internet. अब आपने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल कि आपके कंप्यूटर में आपके घर का नक्शा बिल्कुल तैयार है कि जी इसका फ्रंट इस तरफ होगा, लाइट डायरेक्शन इस तरफ से होगी, फेसिंग टुवर्ड्स द रोड साइड होगा, फेसिंग टुवर्ड्स द पार्क साइड होगा, एंड उसके अंदर ये रूम ये रूम ये रूम. लेकिन ये सारा कुछ अभी है आपके कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में, ठीक है. बट इफ यू वांट टू फिजिकली प्रोसीड टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन, दैट इज द होस्टिंग, राइट. और होस्टिंग को एक स्टेप और आगे देखते हैं. इट डजंट जस्ट गेट देयर, इट नीड्स टू बी होस्टेड ऑन द इंटरनेट, ठीक है ना. जो आपके कंप्यूटर में जो वेबसाइट आपने बनाई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आफ्टर अ वीक और सो आहिस्ता आहिस्ता हम हेड टूवर्ड्स दी वेब डेवलपमेंट करेंगे, वी विल फाइंड आउट कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेबसाइट बनाते जा रहे हैं, बट दैट इज लोकल ऑन योर पीसी, ताकि हम बार बार उसको टेस्ट ट्रायल करते करते हम बनाते जाएंगे. एंड वी विल रीच टू दैट स्टेज जहाँ पे हम बड़े इजीली उसको फिर अपने पीसी से उठाकर वी विल होस्ट दैट ऑन द इंटरनेट, ठीक है. अब वो इंटरनेट पे जिस जगह पे होस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर. वो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. A web hosting provider offers a services that allows you to make our website accessible to anyone who goes to our domain on the internet. ठीक है. By the way, it's just a very lengthy process, एक स्टेप बाय स्टेप. लेकिन अगर आप इस ड्यूरिंग दिस होल कोर्स मेरे साथ साथ रहे और एक एक चीज को नोटेड डाउन करते रहे, तो आई अश्योर यू द थिंग्स विल बी very very comfortable and easy for you, and at the end of the day you will become expert of all the things in one. Okay, so that is the interesting part of this lecture also. So we need to register, purchase a domain from a hosting provider, and then also purchase a hosting services as well. These are two different types,
things altogether. ठीक है ना? रजिस्टर डोमेन करना is a separate thing. Hosting provider से hosting लेना separate thing. ठीक है? These are two different things altogether. A domain name is paid annually and hosting is mostly paid monthly, quarterly, yearly. ये आने वाले टाइम में हम ये सारे काम करेंगे. So that is something very important. अब हम जाते हैं one step ahead. दुनिया में वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम एंड होस्टिंग्स प्रोवाइड करती हैं. उनमें द टॉप लेवल इज GoDaddy. GoDaddy.com पे जाएं एंड वहां पे जाके यू कैन फाइंड आउट एनी स्पेसिफिक डोमेन एंड जाके सर्च कर सकते हैं. हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए स्विच करते हैं फ्रॉम दिस अकाउंट टू, लेट्स से मैं एक यूनानिमसली एक चूज करता हूँ नेम मन्नान हामिद. इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूर सन ऑफ सर हामिद. ओके, मैं आपको चूज करता हूँ MANAN Hamid.com. लेट्स सी, हम जाते हैं GoDaddy.com पे एंड सर्च आउट कि वेदर दिस डोमेन इज अवेलेबल और नॉट. ठीक है जी. सॉरी यहाँ से अभी हमने इधर नहीं जाना एंड यहाँ से मैं स्विच करने लगा हूँ टू वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर पे जाके यू गो टू GoDaddy.com. GoDaddy.com पे जाके you find out that's the website. Okay, that's the website. आप यहाँ से find your perfect domain. Okay, so MANANHAMID and just enter mannanhamid.com and here is the result. Congratulations, is available. mannanhamid.com is available, and the first time if you move 2,249 rupees के बजाय it will cost you 399, just 400 rupees per month. And this is, by the way, just domain. Hosting के charges would be separate and that comes to 3,399. और इस तरह की, खैर अभी आई जस्ट नॉट वांट कि अननेसेसरली आप इस तरह के उस पे जाएं. ये दिस इज जस्ट अ प्रीएम्बल. आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप मूव करेंगे. मैंने एक किसी उनमें से रैंडमली एक स्टूडेंट को उठाया और उसका सर्च करना शुरू किया. मन्नान हामिद, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Can you speak to me, Manan? Yes, sir. Okay, perfect. Today I think you are. Last time you were trying, लेकिन आपका कुछ माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था जिसकी वजह से मुझे आवाज नहीं आ रही थी. Is it loud and clear today? Yes, sir. Perfect. You are in Islamabad? No, I am in Lahore. Lahore. Okay. Manan, good. All set. देखो ना, you find out कि कैसे हम किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को कैसे सर्च करते हैं. Yes, sir. परफेक्ट. सो आई होप ये रिकॉर्डिंग में भी वैसे एक सारा आ जाएगा, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर कमिंग लाइफ के अगर आपने अपने लिए या बीइंग फ्रीलांसर या किसी भी एक्सपर्ट को अगर आपने असिस्ट करना है, सो दिस इज द वेबसाइट जिसके थ्रू आप जाएंगे एंड जाके लेट सपोज मैं दोबारा होम पे जाता हूँ और जाके हम यहाँ से find out any other domain. Let's suppose हम मन्नान के बजाय, thank you very much मन्नान, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा. Okay, let's suppose हम तस्कीन जफर को अनम्यूट करते हैं. तस्कीन, can you hear me? Yes, sir. Perfect. So let's see हम taskeenjafar.com as an individual personal website search करने की कोशिश करते हैं. TASKEENZAFAR. If I'm not wrong, यही spelling है? Yes, sir. Okay, here we go. Taskeen Zafar, and here is the result. Congratulations. You are the lucky one. जिसका domain name available. Okay, taskeenjafar.com is available. Right? Yes, go ahead. सर ये पहले से ही सारे डोमेन नेम
इन्होंने बना के रखे हुए होते हैं। नो, वी आर सर्चिंग थ्रू डेटाबेस। सर्च तो हम खुद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो दैट के आई हैव अ वेबसाइट? आपको पता है ना? यस सर। ओके, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ माय वेबसाइट? हमीद है सर। hameed.com. Let's suppose मैं ये सर्च करता हूँ, and do you think would that be available? Quite obvious that would not be available. Is taken. ठीक है ना? सो ये आपसे कहता है कि अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई आप एक काम करें, कॉन्टेक्ट दिस मैन, और इसकी प्राइस होगी 7,649 रुपीज, एंड दैट इज ऑब्वियस कि अगर मैं चाहूंगा तो आपको बेचूंगा अपनी मर्जी की प्राइस पे, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ओके, लेट्स सपोज हम तस्कीन के बजाय हम किसी एक और, हु वांट्स टू, महनूर, कैन यू हियर मी? महनूर आमिर कुरैशी, कैन यू हियर मी महनूर? सर अस्सलाम वालेकुम। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड। महनूर आप कहाँ से हैं? सर मैं E9 से हूँ, परफेक्ट। PF कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। ओके, MAHNOOR, महनूर। राइट, महनूर, क्या करूं मैं? आमिर, महनूर आमिर लिखूं या महनूर आमिर है। ओके, AAMER। नो, AAMER। लेट्स सपोज हम mahnoor.com सर्च करते हैं। ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो कॉमन नेम है, तो ये अवेलेबल नहीं होगा, एज इट इज सेइंग इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है ना? सो लेट्स सपोज हम महनूर के बजाय हम इसको महनूर आमिर कर देते हैं, AAMER। करेक्ट? यस सर। Mahnur Amir is available. Correct? So that means that is how you go to these GoDaddy, and in coming sessions में मैं आपको यहाँ से one step आगे लेके जाऊंगा कि अब हमने कैसे domains and hostings और कैसे उसको सर्च करना है। ठीक है? So your father name is Amir Qureshi, correct? Yes sir. He is my boss, by the way. Oh. Let me mute you. Okay, so यहाँ से हम एक काम करते हैं, and we'll go back to sign in option. मैं आपका अपना, हर किसी का अपना अकाउंट होना चाहिए इसके ऊपर। Let me go to sign in first, and मैं sign in के बाद मैं यहाँ से sign in करता हूँ with my own credentials। ठीक है? So these are my username and password which is already saved, because मैं ये एक्टिविटीज इस तरह की सर्वर साइट्स के ऊपर, डोमेन नेम्स, होस्टिंग्स एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि मैं एक्टिविटीज में करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, नाउ यू नो दैट के माय डोमेन इज रजिस्टर्ड, राइट? ये देखें आप गौर से, डोमेन्स पे जाके यू फाइंड आउट दैट दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है? इफ यू वांट टू मैनेज एनीथिंग फर्दर ऑफ दिस डोमेन, यू गो टू मैनेज। अभी क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ, आई हैव एन अकाउंट विद GoDaddy, सो आई हैव सो मेनी बंच ऑफ ऑप्शंस जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों की भी ऐसे ही होते जाएंगे, राइट? सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, you know my name, my address and all those kind of things which is already listed there, and इसमें से कोई भी चीज आप एडिट करना चाहते हैं, ऐड अनदर वेबसाइट करना चाहते हैं, कोई ईमेल ऐड करना चाहते हैं, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में हम डोमेन से रिलेटेड करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, there are two things. One is the domain, the other one is the hosting. If I want to get access of my hosting, I have from here applications पे जाके instead of domain मैं चला जाऊंगा सीधा hostings पे। ठीक है? मैं hosting पे जाऊंगा, and again I have my domain that is this, and my hosting that is also there, and that my hosting is, here it is, right? This is my hosting again, that is linked with this .com address. Okay? Not necessarily, देखें, this is the number one world top number one website है जहां से आप जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं डोमेन नेम। इट इज एक्सपेंसिव, लेकिन इट इज US based and very effective, जिसको आप
जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इट इज 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आप रहते हैं, ये कभी डाउन नहीं होते, एंड थिंग्स लाइक दिस, ठीक है ना। अब आप इसमें जाएं, फर्दर अंदर चले जाएं, एंड यू फाइंड आउट के भाई एक दुनिया खुल जाती है आपके सामने। आप किसी भी होस्टिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं अभी एक्सेस कर रहा था, अभी आपको बता रहा था, आप देखें मैं ये दिस इज माय डोमेन, दिस इज बाय द वे माय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आने वाले कुछ कोर्सेज में, आने वाले सेशंस में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल से ये सारी की सारी चीजें करवाऊंगा। बट इफ यू वांट टू गो इट फर्दर, मैं सी पैनल एडमिन पे जाता हूँ, एंड देन उसके बाद एक पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाएगी कि इस एक होस्टिंग के अंदर क्या कुछ अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ओपन इट अप, ये देखें ये खुल गया। और उसके बाद देखें इसके पास यू हैव द फाइल मैनेजर, इमेजेस, डायरेक्टरी, एंड इतना कुछ आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ये सारा कुछ एक होस्टिंग के अंदर आपके सामने होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वेरी इंटरेस्टिंग डेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड मजे मजे की चीजें अगले आने वाले सेशंस में मिलेंगी। So thank you very much, dear students. I just want to wind up today's session here. There are so many and plenty of things in future, inshallah, we will be discussing. And till then, Allah Hafiz, and tomorrow same time we will continue from here onward next. Bye bye.